Meanwhile, West Bengal has been recovering from a disaster of its own. Prime Minister Narendra Modi today has announced a 1,000 crore immediate relief package for cyclone-hit West Bengal while conducting a review meeting in Bashirat along with Chief Minister Mamta Banerjee and Governor Jagdeep Dhankar right after a very rare joint aerial survey where the Prime Minister and Chief Minister of Bengal were in the same aircraft. The Prime Minister said that the entire nation stands in solidarity with Bengal. He also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the kin of those who've lost their lives. Earlier, he conducted, like you can see in these pictures, a joint aerial survey along with Mamta Banerjee. The Prime Minister was seen holding a map as he assessed the damage done by the cyclone from the chopper. Bengal has been massively hit by Cyclone Amphan, which caused destruction in the entire southern part of the state. बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government regarding devolution, regarding this food subsidy, regarding these social schemes, central schemes, wherever our money is there. So I said at least you try to give some money to us so that at this crisis, at this hour of crisis, we can work. At this crisis, at this hour of crisis, what we feel that we must work together. There are so many departments from Government of India also, I said, from irrigation you can get pass, from National Highway Authority, so there are so many state highway is been broken and the village road is also the condition is very bad. You can help us from National Highway. So like this, there are so many areas. They can also help us because they are also existence, state government existence is also there in this country and the central government existence is also there. Now those images of Prime Minister Modi and Mamta today were actually very surprising and very unlike how these two leaders have been with each other in the past. It's been a history of gussa between Didi and Narendra Modi, and we've all seen it from election to before that. It's been a lot of charges and aggression, hostilities and even some gali galoch between Modi and Mamta Banerjee. Here's a history of that gussa between the two, and that's the reason why today's bonhomie, camaraderie and coming together for a cause, cyclone relief, was such a great thing. শুধু রেশনের ভাষণে তো হবে না, ভাষণের সাথে তো মানুষের জন্য রেশনও দরকার। রেশন মানে শুধু রেশনে 2 কেজি চাল দেওয়া নয়। Only bhashan, no ration. নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলাদেশে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় ঠিক ঠাসি একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাকবো। Modi needs a slap of democracy. तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? Are you Pakistan's ambassador or Prime Minister of India? Brought together by cyclone relief, the two leaders were calm, sober, zero aggression. For a moment there, it was easy to forget the history of gussa that exists between Prime Minister Modi and Chief Minister Mamta. তখন শুনলে আমার মনে হয় ঠিক ঠাসি একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাকবো। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। এখন বলছে আমি তো চৌকিদার है, আর লোকে তো বলছে চৌকিদার চোর है। আমি তো বলিনি, আমি বলেছি চৌকিদার झूठा है। दीदी पर आपने बहुत भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने आपका वो भरोसा चकनाचूर कर दिया है। The two leaders have had a rocky relationship. Peaking during the 2019 election campaign
when each day brought a fresh trading of barbs between the two tempestuous netas. पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है, जो हमसे टकराएगा वो चुर-चुर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। छी छी छी, लज्जा है, घृणा है, এই রকম লোককে আপনার প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। वो पब्लिकली कह रही है वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल से वोट चाहिए, আমরা बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा, क्या रसगुल्ला देगा, कैसा मिठाई देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा। 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का नतीजा क्या होता है। Indeed, the two leaders sharing a helicopter today was a Kodak moment for politics. Given Mamta has made headlines multiple times last year when she refused to allow the helicopters carrying then BJP President Amit Shah and UP Chief Minister Yogi Adityanath to land in Bengal for political rallies. They say ye sab chalta hai politics mein. The best way to end then would be with a viral meme. लेकिन दीदी देखिए ऐसा क्यों करते हो आप? दीदी नहीं रखेगी दीदी का गुस्सा, दीदी का गुस्सा। दीदी आप तो इतना प्यार करते हैं। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.